Good evening and welcome to the broadcast of Elite T20 CNDCL. This match is being played between St. John's and CCA 1. The toss update is CCA 1 have won the toss. They've elected to bowl first and they have invited St. John's to have a bat in this hot and humid conditions here in Calgary at Enlarge Cricket Ground. We had a brilliant game yesterday that was played between Knight Riders and Kings 1. Knight Riders, they were able to defeat the table toppers Kings 1 by chasing that 163 in those 20 overs. That match went towards the last over and till the last ball as well. So we hope for more entertaining games going forward. And here we go with the first ball of this match. RN Sharma and Hussain Raza, two batsmen opening in for St. John's. And straight away starts off with a powerful strike, and that will reach the fence for a boundary. They are running, but they'll soon get a signal from the umpire that it's a boundary. But I think it's a good warm-up for the batsman because this is the first delivery that they have faced and started off with the boundary. A change in opening combination for St. John's 1. Usually we don't see RN Sharma opening the batting, but he's opening today. Hussain Raza gets off the mark with the boundary and played towards the mid-on this time. He will come back for two easily once again. So a good start, I would say. Right in two deliveries, they've got 6 runs. I always mention about the importance of power play, especially this ground having a slow outfield. You really need to maximize the power play as a team, and especially for the openers, because it's very good chance for the openers to open up their arms when only 2 fielders are there on the circle. Out of the circle, I would say. And then you can get some boundaries, get yourself in touch and form. This was way outside off stump. A wide delivery signaled by the umpire, so that'll be wide and bias on this delivery. So it's an expensive start, but CCA 1, they are a very good side again. But cricket, it's a very funny game. You can't take anyone easy, because on the given day you never know. Even the teams on the bottom of the table can defeat you by playing good cricket. CCA 1 is right now at number 2 in the points table, whereas St. John's, they are at the second last number, on the 9th number in the points table. But that doesn't mean this game will go casually. Obviously St. John's, they're a really good team. It's just that they had a bad season this time. That's the reason they are in bottom 2. Otherwise they can give some tough competition to their oppositions every time when they come into play. Tries to slog that away. Appeal and umpire signal. That's a bit of height. Bowler's not happy with that. Zahid Chaudhry, left arm medium pace. Let's have a look at that shout by Zahid. That was impact was also outside the off stump, and it was going way over the wickets. So good call by the umpire. So now they're changing a little bit of field positioning here. Mid wicket is going out, and they've got third man out on the fence. So these two are the fielders that are on the fence for Zahid. Last ball of the over. That was a short pitch delivery, played nicely over the fence. We'll wait for the confirmation. It's a maximum.
He placed a fielder over there and he bowled a short pitch delivery, and it was too good of a timing to stop that inside the fence. It was way slower, and when it's that short and slow, it's very easy for the batsman to put that away. And he middled that nicely and played that over the fence for a six. So very good way to end the over. He started off with the boundary, ended with the maximum. It's 15 for none after first one. So both the teams, St. John's 1 and CCA 1. Let's have a look at playing 11 of St. John's. Aryan Sharma, Hussain Raza, Gautam Raman, Agam Sharma, Srivats Vijayan, Rajiv Nair, Harshit Patel, Karan Mehta, Nishant Sharma, Kamala Sankar, and Om Prakash. These are the 11 players from St. John's. And we'll quickly have a look at the squad of CCA 1. Waqas Khan, Saeed Mohammed, Amardeep, Zohaib, Haisim Abdullah, Hamza Bhatt, Zahid Chaudhry, Tanzeel Altaf, Lovepreet Singh, Mustafa Iqbal, and Latif Shahid. And I think Mustafa Iqbal is the guy who's going to bowl the second one for CCA. He's a left-arm spinner, very experienced bowler. And he's very accurate with his lines and lengths whenever he comes into bowl. Very economical as well. It's interesting that CCA are using him in the power play. We usually see him bowling after the power play ends, but it really depends. What are you looking from the bowler and what strategies have you made? Right from ball one. These bowlers, especially Tanzeel Altaf and Mustafa Iqbal, I've played with them and they're very accurate. They're very experienced. They know how to make a trap for a batsman and get them out. Even though you hit them for a six or a boundary, it doesn't matter. They'll still be with a lot of confidence when they bowl the next delivery and will try to get you out. They never just try to finish up their overs. They always try to trap you and get you out, because that's the only way a bowler can play safe, if you can get the batsman out. Otherwise, if the batsman stays there, we saw that yesterday. Kings won, they were 49 for 6 and they were not able to take any wicket after that. At the end of 9 overs, they were 49 for 6. And after that, Raman Virk and Simran Virk from Kings 1, they built up a partnership and they ended up getting 162, which was a huge total after that collapse. So it's really important to have that mindset of taking wickets, and especially when you have these kind of bowlers in your side, they make your work easier. A little bit quick at this time in the air. Not only they bowl, they can bat as well, both Tanzeel and Mustafa. So they are very renowned faces for this league. Flighted delivery, played towards the long on fielder. That's right on the edge of the boundary. That will be easy single. This has been a good over. He's given 3 in that after a quick start against Zahid Chaudhry in the first over. He gave 15 in the previous one. That was on the off stump. Placed that nicely in the gap of a backward point and point. Will get away with the single. Last ball of the over coming up. This is the difference when you have your premium bowlers bowling right in the power play. Sometimes batsmen, when they know that this is the strike bowler or this is the main bowler of the other team, they don't try to go hard on you. This over ends with a dot ball, 19 for none at the end of 2. So when they don't try to get hard on you, that's when you play safe in the power play. That's when you're playing smart in power play, because team is not going hard on your
premium bowlers. So you can restrict them to a small total, especially in power play. Zahid Chaudhary. He made a plan on the last ball of the last over where he placed a mid wicket right on the edge of the boundary, and then he bowled a short delivery. And then the batsman pulled that, but that was timed very nicely to stop that inside the fence. Will he go with the same kind of strategy? Will he try to go short because he's still having that mid-wicket fielder out, and now he's got long on out as well. So let's see. He tried a slower one in the last over on the last delivery. This time he goes full, tries to bluff the batsman with that plan. This is a good mind work from Zahid Chaudhary and captain here. They've placed the field for bouncer, and he bowled a Yorker. That's a good bluff. Umpire wants to have a chat with the captain, maybe. Looks like something serious regarding the field placement or something like that. Captain doesn't seems to be convinced with that argument with the umpire. So it's 5 penalty runs, I guess, added to the total. We'll still have to wait for another confirmation until we see that on the scorecard, but it looks like it's a 5 penalty runs. Yeah, it's a 5 penalty runs. We still need to wait what 5 penalty runs is this for. Fielders are not very happy with that. Obviously, you won't be happy with that, especially those 5 runs getting added up in the total without a ball being bowled. In T20, every run matters. So, especially adding up 5 to the total, maybe this can be the difference between a win and loss towards the end of the game. We'll have to figure that out. In the meanwhile, he's going with the second ball. Played towards the cover field, a little bit of misfield, and they'll get a single. They are very quick. These two are very quick in the middle. Aryan and Hussain. Very good call, very good coordination between these two. And gets away with a single this time. More and more pressure on Zahid now, because the total has gone up to 25. And they already got 7 runs off this over without 6 runs, in fact, without doing anything in this over. That's in the air. And that will pass the mid-off fielder for a boundary. Initially, when the shot was hit, it didn't seem to be timed that well, but it was actually timed well by Aryan Sharma, and he gets his first boundary for today. It came off the middle of the bat, a slower one again. He just chipped that, and it went racing towards the fence for a boundary. There was a long on in place, but it doesn't matter. It's a boundary. So an expensive over. They've got 10 of 3. Zahid, he's not having a good day. It's not a good start for him. They are again chatting about something. This time Mustafa with umpire.
Next ball of the over. That's in there once again. This time a drop catch. This was an easy catch. That should have been taken on the edge of the circle. But it's not the case at this delivery. A drop catch and a chance to Aryan Sharma. He can give you some tough time in the middle if you drop his catches. He's got that ability to hit those big shots. He's got that power as well. So I hope it's not that costly for CCA. But we'll need to figure that out. Again, they'll get away with the single on this delivery. So Zaid Chaudhary is given 22 in his 1.5. Last ball of the over coming up. That's a good shot. Excellent shot. Will reach the fence. This is a very good shot played over mid-off fielder. And especially after that drop catch. Now he knows this can be his day. So he's taking more chances. He steps down the track and plays that over mid-off fielder, which was inside the 30-yard circle, and an easy boundary for Anand Sharma to end the over. And it was a big over for St. John's as they got 16 runs off it. It's 35 for no loss after 3. They've got to a good start. We are done with the half of the power play, and they have made good use of it until now. They've scored 35 without losing a wicket in 3 overs. Mustafa Iqbal comes back into the attack. He needs to strike from here, because this partnership and this power play, it's getting bigger and bigger, which is going to be a really a big headache for captain of CCA. And also, they've dropped the easy catch of Aryan Sharma. So they are making mistakes right in the start of the game, CCA. Played with easy hands, soft hands by Hussain. It clearly looks like they're playing safe against Mustafa. They don't want to take any chances. The only chance that they want to take is rotate the strike against him. Single. Comes down the track. That's in there. Easy catch. They needed to strike, and whenever Mustafa comes in, the wicket is not that far to take. Aryan Sharma, he was dropped in the last over, but he's taken this time. He's departing to pavilion for 12 runs. He could have made a good use of that drop catch. But again, when you try to go hard at these big bowlers, they know how to trap you. They know how to get you out, especially when you're trying to play a big shot. He came down the track and was clearly no timing on that, losing the shape, getting off balanced, and ended up losing his wicket. 36 for 1 now for St. John's after 3.3 overs. It's been a really good breakthrough, I would say. He came in to open the innings for St. John's today, RN. Usually he's known for his bowling more than his batting, but in last few matches he has made some crucial runs for his team, and that's why they thought of opening the attack with him and using the power play.
maximizing the power play, sending him in as a pinch hitter. So he departed for 12. Agam, Agam Sharma is the new man in. Aryan Sharma departs. Agam Sharma walks in at number 3. He's a left-hand batsman. This will be interesting to watch now because Mustafa is as good as a bowler. He's against right-handers, and he will be trying to attack the left-hander as well, who's new on crease. Starts off with a cheeky single towards the backward square leg region to open his innings. Agam Sharma, and now it's Hussain Raza who needs to be there maybe until 10 or 12 overs and bat a little deep from here because they've just lost Aaron, and they don't want to lose any more wickets from here. Outside the off stump, wide delivery this time. Trying to do something extra. Mustafa. Oh, that's a bold and excellent armor that came in after pitching at the off stump, and that's a big wicket for CCA 1. Look at that comeback. Look at that back-to-back wickets from CCA 1 now. In the start of this over, I was saying they have really good power play. They got 35 of 3, and now look at the scorecard. It's 38 for 2 after 3.5. Just gave 3 in this over and taken 2 big wickets. Both the openers back in hut. Hussain Raza going back to pavilion for 17. That was an excellent delivery. A quicker one and an armor that came with the arm. And it took that off stump with that. Excellent delivery. This is the quality that they bring in Mustafa. We are seeing him bowl. We'll shortly see Tanzil bowling as well. Last ball of the over, and 2 new batsmen in. Karan Mehta at number 4. He's a very good batsman. He's a leg spinner too. But right now, his team needs runs from bat. They need to bat deep from here. They need to build up this partnership, Agam and Karan, from here. Otherwise, if you give them a lot of chances, CCA, they're going to grab those opportunities, and they're going to knock you out from this game very early. And they won't be a very happy sight to see that. Played nicely. This over ends with a dot ball. 2 wickets in that. 38 for 2 at the end of 4. So it's a 38 for 2
at the end of 4 overs. New bowler coming into the attack for the fifth over. Right arm round the wicket. Lovepreet Singh. Right arm over the wicket, in fact, sorry. Started off with the wide delivery. Played nicely towards the cover fielder. So they have a left-hand batsman and a right-hand batsman. So this combination, they can try to take this combination deep. St. Jones and especially these two batsmen out there. Because we have seen they started to lose wickets in one of the games and they were bundled up under 100 in that game. So probably they can take some time, Agam and Karan, but at the same time they need to think of the run rate as well because it's a very short game, T20. So yes, you can take your time for maybe next 8 or 10 deliveries, but after that the bare minimum you need to focus on is getting those singles and doubles alongside getting one or two boundaries in every over. And he played that towards the square leg fielder, just tapped that, and that fielder was on the edge of the boundary. So that was an easy two for Agam. So need to bat smartly here, considering what the circumstances and the position of the team are. Way outside off some wide delivery signal again. That's played nicely in the gap of mid-off and cover. But a good job by Zahid Chaudhary to stop that way on inside the boundary rope. They'll just get a single on that. Karan will be on strike. So these players, Agam, Karan, they're timing players, they're touch players. They're not very hard hitters of the ball. So it's very important for them especially to rotate the strike so that they don't put so much pressure on them. That's played towards the square leg fielder. Will just get a single over there. So the strike rotation, this is what I'm talking about. This is very important. So they've got 6 runs off this over without taking any risk. So they need to continue on working on that. Because we still have 7 more deliveries to go in the power play. Maybe if they can get 1 or 2 boundaries in these 7 balls, that will be a great end to the power play. That smashed away and played nicely. There was a fielder over there, but he won't be able to stop that. That's a boundary. This is the boundary I was talking about. And this just came at a very good point for St. Jones to end this over. It's a 48 for 2 at the end of 5 overs with that boundary. It was a way outside off stump delivery, a lot of room given to the batsman. It was a half volley, and he's played that nicely over the point and backward point, a fielder. There was a sweeper cover out there. He was running to stop that, but he was unable to. They got 10 runs off that over without taking any risk. This is the kind of smart batting I was talking about. 48 for 2 at the end of 5. Abdullah is coming into bowl. The last over of the power play. It's an interesting choice.
Starts off with a full toss delivery. Batsman misses that easy one. Keeper misses that. They'll probably come back for two. We'll wait for the umpire signal. Was it a bye or from the bat? Looks like it was from the bat. Haven't seen umpire signaling anything. So that means it came from the bat. But with that double, they'll bring up 50 for St. John's. That's guided towards the short third again. They'll probably come back for two. No, they won't. Good job by Zaid. Really good work there. They can have a slip in play, especially for Karan, because he's a touch player and he likes to play on the short third area. And while playing that, maybe he can edge one. So they don't have any slip for Agam as well. Dot delivery. Plays that towards mid wicket and they'll come back for two. Good running. Good coordination between the wickets by these two young players. That was a quicker delivery. Played towards the point region. And it will be a dot ball. Last ball of the over coming up. This has been a good over. Just 5 of it for CCA. And we'll end this over with a dot ball, Abdullah. It's a 53 for 2 at the end of power play and 6 overs. So just to give you a recap, if you just joined this broadcast, that CCA won the toss, elected to bowl first. And they were very expensive in the first 3 overs. And after that, they took 2 big wickets. Mustafa Iqbal, he took wicket of RN and Hussain both. RN, he departed for 12, and Hussain, he scored 17 today. Agam and Karan Mehta, they are trying to build up a partnership here. And if we look at the bowling card, they've used 4 bowlers. Abdullah was bowling the previous one. For some reason, it shows Mustafa Iqbal bowled 3, which scorer will fix that soon. But Zoeb is the new bowler in for the 7th over. Single to start off his spell. He's got a very short run up, but he generates a lot of pace from that run up. He just takes 4 or 5 steps until he bowls a delivery. And he's very accurate with his lines and lengths. He usually tries to bowl on the good length on the 4th stump or the 5th stump. Doesn't try to give a lot of room to the batsman. But he's very quick with that short run up. Again pulled nicely.
Just a single to get off strike for Karan. He's taking his time. He's not one of those players who tries to go hard. He likes to play grounded. He likes to play along the ground and convert those singles and doubles and get one odd boundary and over. So this was a good over from Zohaib. Just 5 coming off that. It's 58 for 2 at the end of 7. Lovepreet Singh comes back into the attack this time from the broadcast end. And this over has started off with a single as well. This game is going very quietly for St. John's. And CCA 1, they will be very happy with the way it's going. Because they won't like to give many runs in these middle overs especially. Yes, they'll like to take wickets. And that's what St. John's won't like to do. It's a very interesting game where one team is trying to defend their wickets and score some runs, and the other team is trying to stop them from scoring runs and take their wickets. So your opposition, they'll try to give you a tough time in the middle, and especially these two. This partnership is now of 22. These two youngsters batting in the middle for St. John's after they lost 2 back-to-back wickets in that over of Mustafa in the 4th over, where they lost Aryan and Hussein in the same over. After that, I would say it's a good partnership because right now they're going with the run rate of 8.18, and the projected score from here is around 163. So that's not even a bad total, but for a team like CCA, that's a missed time shot. But he was lucky that it landed in the no man's land area. So he's trying to take some chances. You see, there was no timing on that, and he was very unhappy with the way he played that. He knew the moment he played that that's a short pitch delivery. Should have cut that away over the backward point region because there was no one over there. Steps down the track this time, misses that. And it's end of the over by Lovepreet as well. There's 4 coming off that, 62 for 2 at the end of 8. Zohaib Ahmed comes back into the attack, gave 5 in his first one. Agam Sharma, he will be on strike.
Well played towards the point fielder. Will just get a single. Good job done by Abdullah on the point region. Tries to drive that. Excellent delivery. Just leaving the batsman just a little bit after pitching. He's bowling consistently on those lengths. Right near the fourth and the fifth jump. They'll come back for two with that. He just plays that in the gap. He needs to get things going from here, Karan Mehta, because CCA1 is one of those sides who can chase big totals as well. They have that ability to put pressure on you right from ball one when they are batting. They've got that class in their batting lineup. They've got that temperament, the ability. So need to set up a good total, and in order to do that, you need to get some boundaries and maximums, which we are not able to see from Karan. Again, a very good over. Just three coming off that. It's 65 for two at the end of nine. Tanzil Altaf comes to the attack for bowling. Starts off with a full toss. Usually takes time on his first two deliveries to settle things down for his spell, and after that he's a very deadly bowler because he always strikes, and he always gives that breakthrough that the team needs, especially this partnership. It's of 28 now, and they will be looking to break this partnership now. Flighted delivery played towards the cover fielder. Karan Mehta is playing at the strike rate of 55, which he won't be very convinced with that, especially in T20s. So that's a full toss played towards the mid wicket fielder. They'll probably come back for two. That's gonna be so hard too. That was not a very good throw from the fielder over there. Otherwise, it could have been an easy run out, and Agam could have lost his wicket if it would have been a good throw by the fielder. But for now, they got two. Pitched up this time again by Tanzil. He's got a very good flipper, and he knows his variations. He knows when to bowl those flippers and those googlies. He's got all the variations that you need as a leg spinner, and in order to get a batsman out. And now it will be interesting to see how he bowls against Agam. Will he go quick?
Will he try to bowl googly? He's coming diagonal from the wicket. It's going to be very interesting. Will he try to go quick on offside? That's a googly. He tried that and it was a full toss. No timing on that. That was an easy chance for Agam to put that away for a boundary or a maximum. That was an easy chance to put that away for a maximum. But he totally missed that. Just a single on that. 70 for 2 at the end of 10 overs. We are halfway through this innings. And St. John's, they're at 70 for the loss of 2 wickets. This has been a batting card for now for St. John's. Aryan Sharma, Hussain, they both departed in the same over. Aryan scoring 12, Hussain scoring 17, and then Agam and Karan. Agam is on 18 and Karan is playing with a very slow strike rate. Strike rate is a key right now in T20 eyes. And in every form, strike rate is very important nowadays. That's edged and that's going towards the fence, and that will probably reach the fence, I guess. Fielder has given up the chase, and that's a 4 signal by the umpire. That's a welcome boundary for Agam. He was trying to play that over the cover fielder, which was a good idea because there's no cover. But he edged that and still got a boundary. So no matter how the runs are coming, they need runs from here, St. John's. Tries to slog that this time. He's trying to go hard, which is not his strength for Agam. As I mentioned earlier, they're touch players, they're timing players, and especially in these slow outfield grounds, it's a challenge for these kind of players who like to time the ball, because when they time it, it tends to stop while it goes out of that 30-yard circle. But he's got a good timing on that. He's got enough timing on that that he can clear the fence a maximum. He's converting this over to a big one now. Agam Sharma, first maximum for him. Zohaib tried to bowl a slower one, but it was very easy for Agam to pick that up and put that over the long on fielder for a 6. A good shot. This time he bowls quicker. Plays that towards the point region just for a single to end this over. This was a good over for St. John's. They got 11 of that. They're 81 for 2 at the end of 11. Tanzil Altaf comes back into the attack. He'll be bowling against Agam. This time, very good delivery, but keeper missed that. Batsman missed that, and it's going towards the fence. This will reach the fence. We'll wait for the umpire signal. That was it a bye or it came off the bat? Yes, it was a bye. It is 4 byes. Keeper missing that. Uh, Tanzil won't be very happy with that.
It won't go in the quota of Tanzil's over, but still 4 runs to start the over. Not a very good start. Plays that nicely again. Over the cover fielder. Again, back-to-back boundaries. The first one came off the bice. And this one, right from the middle of the bat, timed nicely, placed nicely. It was again a googly. He picked that up and played that towards that long off region. And it was very square to that long off region. That's why he was able to get that boundary. So they already got 8 runs off this over. Agam, he's now looking good in the middle. He's trying to attack. He's trying to put some pressure. That's again played nicely. A good stop by the cover fielder. He has for sure saved 2 runs. The cover fielder. And that's a catch, I guess. Yeah, I think Agam is walking out of the crease. We don't know what exactly happened here, but it looks like Agam has lost his wicket. Yeah, it's 89 for 3 now. We thought it went on bounce towards the cover fielder, but that went straight to the cover fielder. So that will be end of the innings for Agam. He was looking very good and he scored 33 of 27 with 3 fours and 1 6 with the strike rate of 122. But he'll have to depart. Tanzil Altaf gets his first wicket for today. Gautam Raman is the new man in at number 5 for St. John's. He's trying to play smart. Karan. He was almost ready to run. And then Tanzil said, no, no, it's not that time to run. And he stops his action and tries to do the mankading. But Karan was safe over there. So just a single now. So 90 for 3. Last ball of the over, Karan will be on strike. That's played towards the sweeper cover. Just for a single. To end this over, it's 91 for 3 at the end of 12 overs. We are left with last 8 overs of this innings. 48 deliveries. And they have 7 more wickets in hand. The projected score, it looks like 152 if they go at the same run rate from here. They're going at a 7.58 with just losing the wicket of Agam in the previous over. Look at that attempt to do mankading. I think he stopped himself from doing that run out because he just wanted to give him a warning. Otherwise, he could have get that out by hitting that to the wicket. Mustafa Iqbal comes back into the attack. This is his third over and he's taken 2 wickets already. Played that towards the short third just for a single. In the scoring, it's a little bit of error you might see on the screen. That it shows that Mustafa has already bowled 3 overs, but it's not the case. One of the Abdullah's over is being counted in the name of Mustafa.
So that's a reason. Go short at that point. We'll just get away with a single. Karan Mehta here. He really needs to get going from here because he hasn't scored any boundary or a maximum. And I think like he's feeling a bit of pressure now because as a batsman, you really need to get a boundary or a maximum to get that confidence that you can clear the fence or maybe put balls in the gap. Yes, singles are double are very important, but boundaries, they're hard to score, but once you start to score them, your team in total increases pretty fastly. So with that single on the last ball, we have ended the over. It's 95 for 3 at the end of 13 overs. Tanzil Altaf comes back into the attack for his third over. He's taken wicket off Agam in his previous over. Gautam Raman, he's new man, and it will be hard for him to hit right from the start of his innings because the batsmen who have set, they need to take responsibility from here because they don't have much time left in this game now. That was a really bad delivery, but again, that safe mindset from Karan, it's not allowing him to play big shots. He's trying to play safe, he's trying to play grounded shots on every ball. Even he missed one or two full tosses in the previous overs, we saw that. But this is not what St. John's want from him. They probably want him to go big on every ball from now because he's been there for a while. He's on 16 from 24 with the strike rate of 68. 17 from 25, in fact. Plays that nicely towards the fine leg region. I don't think so. That'll reach the fence. Oh, that did. Hamza, but signals boundary from the square leg region. And that was a quick delivery from Tanzil Altaf. And that's first boundary finally for Karan Mehta. And this will give a lot of relief to him. This was down the leg ball. It was bowled quicker this time. And he places that towards the fine leg region. There was no fine leg. And he got a boundary on that. Last one of the over. A dot ball to end this over. 102 for 3 at the end of 14.
Short pitch delivery this time, and this is over the fence. Right towards our broadcasting van, and it's a 6. 4, 4, and a 6. For Gautam Raman, and now Mustafa Iqbal. He's having a hard time in the middle. He needs to come back from here. He needs to strike. "14 runs off first 3. Again a quicker delivery. Again goes past the cover fielder. This will probably another boundary. 18 runs off the over now, just off 4 deliveries. What a good over. What a game-changing over for St. John's. And especially against a very good bowler. And one of their main bowlers, Gautam Raman. He's on 23 now, just from 12. 3 fours, 1 maximum. He's timing the ball nicely today. He's looking in good touch. If he continues to play like that, it will be a very positive sign for St. John's. 2 more to go. How many more he can get from this over? He's coming over the wicket now. Mustafa Iqbal trying to do something different. A dead delivery. Maybe batsman is saying that he didn't knew Mustafa is coming from over the wicket. He's complaining about that. That's why he didn't face that delivery. He just left that one. And now he's coming over the wicket again. Goes quick and again in the air. Fielder underneath that. Drops the catch. That was one of the easy catches for a fielder like Vakas. But he has dropped that catch. This time it was not that good of a timing. It was also a quicker delivery. He was a little late on that, but he got help from the fielder. Just a single. They've got 19 of this over. Last one to go. That's chipped in there. This one should be taken. Hamza, but he doesn't drop that. Finally a wicket. Karan Mehta will have to depart. 3rd wicket for Mustafa Iqbal, and finally a sigh of relief for CCA, as this was a very expensive over for the first 5 deliveries, and now they've got a wicket on the 6th delivery, and they've got a Karan Mehta out, who will depart for 21 from 29. 28 balls, in fact, just 1 boundary with the strike rate of 75. He should have played that with the flow, should have got some power on that, but he just tries to chip that. And Karan Mehta, he departed for 21 from 28. A good catch by Hamza Bhatt, and that was a wicket to end the over. They're 4 down now, St. John's, and we are left with last 5 overs of this innings. Srivatsa Vijayan is a new man in. He'll be batting with Gautam Raman. Lovepreet Singh comes back into the attack. He's given 14 of his first 2. Goes towards the square leg fielder. They'll probably come back for 2. Yes, they easily will. It's a very slow outfield, and whenever you play shots like these, especially in the gap, you can always get those 2 runs. He's looking good, Gautam Raman. He's on 26 from 14. Plays that straight again towards the long on, just single. Srivatsa, he will be on strike for the first time in this match. He was going all over the park in the last over, Gautam. He started off with the boundary over the cover fielder, then he played straight. Then he went over mid-wicket for a maximum, and then he again went
towards the cover fielder for a boundary. Srivatsa opens his account with a single. Mustafa Iqbal, he ended his spell with that expensive over by giving 30 of his 4 overs, taking 3 wickets. Yorker from Lovepreet here. A good delivery. This has been a good comeback over from Lovepreet and CCA. Wide delivery. He's only given 5 of the first 4 of this over after giving 19 runs in the previous over of Mustafa. He again goes towards the cover fielder, coming back for the second one. He's smashing the ball so hard, timing it so nicely today, Gotham. He's hitting every ball from the middle of his bat. And when you hit that as a batsman, you're right at the top of your confidence. That's why you're seeing him play big shots as well. He again tries to go big. This time a little bit of mistiming on that. They'll be happy with the single to end this over. 8 runs coming off that over. It's 129 for 4 at the end of 16. Zahid Chaudhary comes back into the attack for his third over. He was very expensive in his first 2. He bowled them in the power play. And now we'll have to see how he's gonna bowl his next 2 overs. Especially now we are in the death overs. He's bowling the important overs for his team. Bowling first 2 in the power play and then last 2 in the death overs. He's trying to go full and trying to hit those block hole. If you don't give enough room to the batsman, it's really hard to get that elevation and timing on that. He's looking good today, Gotham. Even after that, it was a hard delivery for him to hit that, the previous one. Srivatsa on strike. Good delivery. He's trying to go as full as possible. But the only limitation of bowling this kind of length is if you miss by an inch or so, you give an extra chance to the batsman to hit you straight because it's right around the corner of bowling in the slot. So once you get that in the slot, and especially in this death overs, batsman is for sure gonna go hard on you and try to hit you maximum or a 4. So he really needs to be careful with that line and length that he's bowling. Looks like he's coming around the wicket now. Oh, this time looks like it's a hit wicket. Because this ball was not in the line of stumps.
but he himself has smashed the wickets, and Gautam Raman, he'll have to depart for 31. Let's have a look at the replay and see what happened over there. Oh yes, that's a hit wicket. He was that deep in the crease, and that i- rather than smashing a ball, he thought of smashing his stumps. He was looking really good. That's a big wicket for CCA. He's departed for 31 of 21 with 3 boundaries and 1 maximum. Gautam Raman. Zaid Chaudhary gets his first wicket. Not that he got it, but Gautam Raman. I don't know, he got angry on himself for some reason, and he has smashed his bat right on the wickets. It's 5 down now for St. John's. They are 131. Still have 3.2 overs to go from here, and they'll probably try to score 30 odd runs in this remaining 3 overs. Just a single to end this over. A really good over from Zahid Chaudhary. He just gave 4 in that. It's 133 for 5 at the end of 17. Looks like again a scoring error, because it seems like the over was done, and but now it's done officially. 133 for 5 at the end of 17. Tanzil Altaf comes back into the attack. This time he tries to go big. A fielder is over there, but it will land just short of him. Just a single. Srivatsa, he was on strike for that. He's trying to go big against Tanzil. So it's his last over. He has given 19 and taken 1 wicket off Agam. Today Tanzil Altaf. That's again pitched up. Beautiful loop given by Tanzil. It's played nicely again. They're coming back for the second one. They're putting pressure on the fielders, and they'll be able to get 2. Shuffles a little bit. Plays that towards the fine leg fielder. It was just a little touch to place that to the fine leg fielder. That's why it won't run to the fence, but they'll still run 3 on that. So it's good running between the wickets by these two, Rajiv and Srivats. Comes down the track, and it's a not out.
He was very late keeper over there. He needed to be quick. The moment he kept that ball in his gloves, he should have taken off the stumps, but I don't know what he was waiting for. That was way too late to get the batsman out. But that's a dot delivery. Again a loopy delivery. Plays that towards the long off fielder just for a single. To end this over, it will be 140 for 5 at the end of 18 overs. They're going at 7.8 runs per over, and the projected score from here is around 156. We're left with last 12 deliveries of this innings. Zahid Chaudhry is coming into bowl his last over for today. It will be interesting to see who's gonna bowl the last for a ball for this innings and last over for this innings, because this is last over for Zahid, and he's given 30 in his 3 overs. He's lapped that over, and it's straight to the fine leg fielder. He was trying to play a different shot. He was trying to do something different because Zahid was continuously trying to bowl full. So maybe he wanted to disrupt his line in length, but he was unable to do so. That's a second wicket for Zahid. He took wicket in his previous over as well. That came through, hit wicket. But this one, he's got another one. Srivatsa, he'll depart for 5. No boundaries today for Srivatsa. They're 140 for 6 now. CCA. In fact, St. John's. Let's play towards the mid-wicket fielder. They're trying to come back for the second one, and they'll easily be able to do that. So new batsman Om Prakash Suburam comes onto the crease. Starts off with a double for this innings. We have 10 more deliveries to go. How many runs can St. John's score from here? Again played towards the long on fielder. Just a single this time. Rajiv will be on strike. It's been a good over. Just 3 of 3 until now and a 1 wicket. This was played towards the mid-wicket fielder, and that's a run out. Very good job done by Vakas over there on the mid-wicket. It was a slower delivery. He tries to play that towards the mid-wicket area. He was just able to find that fielder and will depart now. Rajiv. He gets run out, and it's 143 for 7. Last 2 balls of this over. They've got 2 wickets off this over. One through run out, and one with that catch. They're coming back for the second one again. Can this be a run out again? No. They'll be able to make their crease, both the batsmen. A double
It takes the total to 145. They got a really good start in the power play, and after that, they slowed down after losing 2 wickets. And then Gautam Raman came in. He played a good cameo of that 32 odd runs, and then after that, now they are struggling. It's a good work done by the fine leg fielder, but he won't be able to stop 2 runs on that region. So it's a double to end this over. 147 for 7 at the end of 19. Last 6 balls to go. This double ends the spell for Zahid Chaudhary. He's been really good in the death overs because he gave 26 in the first 2 when he was bowling in the power play, and after that he has just given 11 runs in his last 2 overs when he came in into power in the death overs, and taken 2 wickets as well. So good end. Not a good starting, but a good end for Zahid Chaudhary's spell today. So last over, looks like Lovepreet is coming in to bowl the last one. He's given 22 of his 3 overs, Lovepreet Singh. There's a sweeper cover out there, and this will be just a single. That's in the air. Can fielder take that? There's a fielder underneath. He drops another one. They're coming back for third, I guess. That was a very easy catch dropped by the fielder over there. And they'll take 3 of that, and with that 3 they have completed 150. Team St. John's, that's a bouncer. A wide delivery signal by the leg umpire. He tries to do something different, Lovepreet. He's got that pace, so he was trying to go short at the batsman. Just a single towards the long on region. Three more balls to go. How many more they can get from here? They're 153 for 7. That's a quick delivery, and that's edge, and that's gone. He was trying to play that powerfully rather than playing that with the timing. And he lost all his shape, all his balance. And he has lost his wicket, Om Prakash. A good catch by wicketkeeper Amardeep. Om Prakash departs for 10 of 6 balls. And that's 8th wicket down for St. John's. Nishant Sharma comes into the crease. Last 2 deliveries to go from here.
That was outside the off stump. We'll wait for the umpire signal. That will be a wide and bias. So that's 2 runs added to the total. So that'll be 155 for 8. Remember, St. John's have got 5 penalty runs. We still don't know the reason for that penalty. We'll double check that with the umpire and the scorers maybe after this innings. But that's another double in the total. So the total is at 157 now. Last ball to go. Lovepreet is given 32. Taken 1 wicket right in this over. Taking the wicket of Om Prakash. Last ball of the over. And this innings. So good Yorker to end this innings and this over. Just a single on that. So St. John's, they'll finish on 158 with the loss of 8 wickets. And when CCA will come to chase this down, they'll have to chase 159 of the given 120 balls. This will be interesting chase to watch out for. But have a look at the batting card for St. John's. RN Sharma Hussain, they opened the innings for St. John's. Scored 12 and 17 respectively. Then Agam and Karan Mehta, they were trying to build up a partnership. Agam scored 33. Karan Mehta scored 21. Gautam Raman, he played a good cameo but got out hit wicket at 31. And small contributions from the tail as well, adding up to that total. If I talk about the bowling, they came back pretty well, CCA, because in the start of the innings they were 35 for no loss, St. John's, in the first 3 overs. Then Mustafa, he gave 2 breakthroughs in that same over, and after that the game changed from there. Zahid Chaudhary 4 over 37 for 2. Mustafa 4 overs 30, taken 3 wickets. Lovepreet 4 over 33, 1 wicket. Abdullah just bowled 1 over today, 5 runs in that. Zohaib 3 overs 19, and Tanzil Altaf was pretty good as well with his 4 overs 25 for 1. So summary of the innings until now is that CCA won the toss, elected to bowl first, and now they have a 159 to chase down in this 20 overs. So we'll be going towards a short break for this innings, and we'll be right back after this. Thank you.
चेस की शुरुआत होने जा रही है और दोनों ओपनिंग बल्लेबाज CCA 1 के क्रीज पे आ चुके हैं। इस समय सेंट जोन्स 1 और CCA 1 के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीता था CCA 1 ने, गेंदबाजी का फैसला किया था। शुरुआत अच्छी हुई थी सेंट जोन्स की बतौर बल्लेबाजी टीम, लेकिन उसके बाद सिर्फ 159 रन बनाने में कामयाब रहे, जिसमें अगम शर्मा के वो 33 रन थे, गौतम रमन के इम्पोर्टेंट 31 रन और करण मेथा के 21 रन। सो 159 करने हैं इन द गिवन 120 डिलीवरीज। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये मुकाबला। अगर अर्ली ब्रेक थ्रूज मिल पाते हैं, अगम ये कहे आर्यन शर्मा लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। अब्दुल्ला सामने होंगे, स्ट्राइक लेंगे सईद मोहम्मद और हसीम अब्दुल्ला। बहुत कमाल की ओपनिंग जोड़ी, अटैकिंग ओपनिंग जोड़ी CCA के लिए, और अक्सर रिजल्ट्स इनके फेवर में जाते हैं जब जब इन दोनों के बल्ले से रन निकलते हैं। पहला 6 ओवर पावर प्ले होंगे, जिसमें सिर्फ 2 फील्डर बाउंड्री रोप पे होंगे, और वो 2 फील्डर्स अभी के लिए आर्यन शर्मा की गेंदबाजी पे होंगे लॉन्ग ऑन, और मिड विकेट का फील्डर ऐसा प्रतीत होता है। आर्यन शर्मा गेंदबाजी की शुरुआत, पहली गेंद लेके तैयार है। जैसे अंपायर के सिग्नल का इंतज़ार हो रहा है कि कब वो इशारा आए और पहली गेंद हमें देखने को मिले। फिलहाल स्ट्रीम में अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए स्ट्रीम को और ये मुकाबला एंजॉय कीजिए। पहली गेंद डाउन द लेग से शुरुआत हुई है और सिंगल जो कि होना चाहिए था। थोड़ी लेजीनेस दिखी वहाँ फील्ड में, तो डबल मिल जाएगा। तो 2 रन से शुरुआत हुई है इस इनिंग की। लेग बाइस के चलते आए ये 2 रन। यूजुअली लेफ्ट आर्म सीमर्स की कोशिश रहती है कि वो अंदर लाएंगे इनको, उसके लिए वो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप ओवर द विकेट से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। ये अच्छी गेंद थी, लेंथ भी अच्छी थी और थोड़ा सा शफल हुए अब्दुल्ला, वहाँ डॉट गेंद होगी ये। फिलहाल यहाँ बड़ा शॉट आया है और कमाल का शॉट आया है। बहुत ही अटैकिंग बैट्समैन है, हार्ड हिटिंग करते हैं और मैक्सिमम पाया है पहली इस ओवर में। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं वो, लाइन और लेंथ थोड़ी सी, जब वो गेंद हिल रही है थोड़ा सा शफल हुए और खेल दिया उस गेंद को बहुत आसानी से 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। कुछ इसी प्रकार से अटैक चलता रहेगा पूरे पावर प्ले में, या कहीं पूरे इस मैच में अगर ये दोनों बने रहे। 159 रन की ये चेज कम पड़ सकती है अगर ये दोनों क्रीज पे रहते। अपील की जा रही है, लेकिन लेग सर पिचिंग बाहर थी ऐसा प्रतीत हुआ। शफल कर रहे हैं लगातार अब्दुल्ला, नज़र डालिए इस गेंद पे, इस पे अपील हुई। जी हाँ बिल्कुल, पिचिंग आउटसाइड लेग लगी तो ऐसा लगा बीच में ही थी, और हाइट फैक्टर भी था उसमें, तो डॉट गेंद होगी। लेकिन एक अच्छी कम बैक मैक्सिमम के बाद आर्यन की, वहाँ हल्के हाथ से खेला उसे सिंगल के लिए। सईद मोहम्मद स्ट्राइक पे आएंगे। बहुत कमाल के खिलाड़ी है ये भी, दमदार बल्लेबाज हैं। आज गेंदबाजी नहीं की, यूजली गेंदबाजी भी करते हैं अच्छी खासी। जो आपके साथ पास बहुत अच्छे खिलाड़ी हों
अपनी टीम में, तो सबको मौका देना भी थोड़ा कठिन होता है कप्तान के लिए। सो आज गेंदबाजी ज़रूर नहीं की, लेकिन अब बल्लेबाजी में ज़रूरत है इनके बल्ले से रन निकले, क्योंकि ये चेज़ बड़ी हो सकती है अगर विकेट्स खोते हैं तो, जो कि बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अच्छी गेंद, ये बहुत अच्छी गेंद। यहाँ थोड़ा दर्द महसूस करेंगे, लेकिन उतना ही मज़ा भी महसूस करेंगे। यहाँ आर्यन शर्मा इस ओवर की समाप्ति डॉट बॉल के साथ। 9 रन आए उस पिछले ओवर से, एक ओवर के बाद 9। थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस वहाँ देखने को मिला, और यहाँ थोड़ा सा वो नीला घाव के जिसे कहते हैं वो छोड़ा होगा उस गेंद ने। 9 रन बने पहले ओवर से बिना किसी विकेट के। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है, दूसरा ओवर, और कमाल के शॉट से भी शुरुआत हो गई है। 4 रन मिल जाएंगे। टाइमिंग बहुत कमाल की रहती है। जब जब अब्दुल्ला के बल्ले से वो गेंद निकलती है तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती गेंद को बाउंड्री तक जाते हुए, क्योंकि टाइमिंग, वो क्लास, वो एबिलिटी, वो स्किल, वो सब है। चौके से शुरुआत हुई है ओम प्रकाश सुबुराम के इस स्पेल की। पहले ओवर से भी 9 रन आए, उस ओवर में मैक्सिमम आया था अब्दुल्ला के बल्ले से। फिर से एक बार अच्छा शॉट, या कैच ड्रॉप। उसी शॉट के लिए वो फील्डर था वहां, लेकिन ये ना सिर्फ कैच छूटा है, ये प्रॉबेबली मैच भी हो सकता है और एक रन भी मिलेगा उस गेंद पे। बहुत डिसअपॉइंटेड है फील्डर अपने आप से, लेकिन अब वो डिसअपॉइंटमेंट का कुछ खास फायदा होगा नहीं, क्योंकि अब्दुल्ला को आपने एक मौका दे दिया है। बार बार बड़े बल्लेबाज मौके नहीं देते हैं, ये शायद पहला और आखिरी मौका भी हो सकता है। उस मौके पे चौका लगाना फील्डर का काम था फिलहाल, जो कि चूके। यहाँ बहुत बार डाउन द लेग, और इजी 4 रन मिल जाएंगे वाइड एंड बाइस के। यहाँ रन्स लीक करते हुए सेंट जोन्स, शायद वो दबाव को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और आसान रन लीक करते हुए 19 पे पहुंच गया है टोटल मात्र 1.2 ओवर्स में। बैंक में उतने रन नहीं है जितने लीक हो रहे हैं। कुछ बात करनी होगी कैप्टन को यहाँ गेंदबाजों से, स्ट्रैटेजीज पे काम करना होगा, प्लान्स नए बनाने होंगे, एग्जीक्यूशन पे काम करना होगा। फिलहाल ये गेंद देखिए, बहुत खराब गेंद, कीपर भी क्या ही करते हैं वहां, बहुत दूर। नाराज हैं गेंदबाज अपने आप से, और हों भी क्यों ना। 19 रन बन चुके हैं। सईद मोहम्मद पिछले ओवर में एक गेंद खेली थी। वो लेजी एलिगेंस है सईद के पास, बहुत काम रहते हैं, अपनी बल्लेबाजी के बारे लगातार सोचते रहते हैं, और जब जब गेंदबाज सामने आते हैं तो वो रिजल्ट्स देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं स्कोर कार्ड देख रहा था किसी मैच का, उसमें 136 रन की पारी खेली थी सईद ने, तो बड़ी पारियां खेलने का भी दमखम है, और वो टेम्परामेंट है कि तेज भी खेल सकते हैं और
अगर स्लो डाउन होने की ज़रूरत हो, लंबा खेलने की ज़रूरत हो, तो वो भी कर सकते हैं। सारे गियर्स हैं इनकी गाड़ी में और किसी भी गियर में कोई भी दिक्कत आती नहीं है। फिलहाल अब्दुल्ला एक बार फिर से स्ट्राइक पे, एक चांस मिल चुका है। ओम प्रकाश ऑफ स्टंप पे गेंदबाजी कीजिए, वो गुड लेंथ का एरिया पकड़िए। गेंद नहीं है, थोड़ी शेप भी करेगी। ये गेंद अच्छी है, ये कमाल की गेंद है। कुछ इसी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी चाहिए, बिकॉज इन दोनों को अगर आप वो मुफ्त के रन बांटेंगे तो ये मुकाबला बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। आखिरी गेंद ओवर की, 11 रन आ चुके हैं इससे। सिंगल के साथ ओवर समाप्त, 21 बिना किसी नुकसान, दो के बाद। नए ओवर की शुरुआत, तीसरा ओवर। आर्यन शर्मा एक बार फिर से अटैक में आए हैं। ऐसा लग रहा है आज अब्दुल्ला शायद वो दमदार शॉट्स की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं रादर देन टाइमिंग द बॉल। यूजुअली देखते हैं कि बहुत क्लास से खेलते हैं, वो ऑन द मेरिट ऑफ बॉल खेलते हैं, लेकिन आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बड़े शॉट्स लगाने में ज़्यादा इंटरेस्ट, इसीलिए थोड़ा सा वो बैलेंस भी बिगड़ रहा है बल्लेबाजी में। ये लगा बड़ा शॉट, यहां बैलेंस पूरा कमाल का था और ये बहुत दूर गई है बाउंड्री के बाहर। ये इतनी दूर चली गई कि अंपायर ने सोचा भी नहीं सिग्नल करने का। विदाउट अ डाउट मैक्सिमम स्लॉट में थी ये तो गेंद, और फिर वहां पार्किंग लॉट तो नहीं है, लेकिन वो खाली लॉट बहुत पड़ा है दूसरे मैदान का जहां ये गेंद जाके गिरी। पूरे 6 मिलेंगे उस पे। दूसरा छक्का, दूसरा मैक्सिमम अब्दुल्ला के नाम। एक कैच छूट चुका है, बार बार याद दिलाता रहूंगा मैं वो कैच, क्योंकि ये कैच बहुत महंगा एक ऐसे बड़े बैट्समैन का जो कि मुकाबले को बिल्कुल आपसे दूर ले जा सकता है। अगली गेंद आर्यन, इस बार गैप में खेला, वहां सिर्फ सिंगल मिलेगा। देखिए जब एक बड़ा शॉट आ जाता है उसके बाद बैट्समैन भी जानते हैं कि इस ओवर के रन पूरे हो गए हैं और वो ज़्यादा चांसेस भी नहीं लेते। तो इट्स ऑल अबाउट दैट वन बॉल। अगर बैट्समैन ने वो एक गेंद को कन्वर्ट कर लिया तो फिर अगला ओवर बैट्समैन, अगली गेंदें कुछ कहें, वो बैट्समैन कंट्रोल करते हैं। सही दोगे स्ट्राइक पे। अच्छी गेंद, यहाँ पैर चल नहीं रहे हैं सईद के, गेंद तक पहुंच नहीं रहे हैं, सिर्फ वो बल्ला जा रहा है गेंद तक। और जब जब सिर्फ बल्ला जाता है गेंद तक, फिर आर या पार की लड़ाई रह जाती है। या तो फिर आप बहुत रन बटोरते हैं या स्ट्रगल करके अपना विकेट खोते हैं। या सईद के साथ आज क्या होगा। फिर पैर नहीं चले थे लेकिन बल्ला चला इस बार। जैसा कि मैंने मेंशन किया, आर या पार की लड़ाई है, या तो बहुत रन आएंगे या स्ट्रगल करके आप पवेलियन जाएंगे। फिलहाल रन आते हुए एक चौका, टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं लेकिन पावर बहुत है। बल्ला भी हाथ में घूमा था लेकिन चौका। आखिरी गेंद इस ओवर की, 32 हो चुके हैं।
इस बार फिर से बड़ा शॉट, किनारे से आया, चौका आया। कोई फर्क नहीं पड़ता रन कैसे आ रहे हैं, सिर्फ रन आने चाहिए क्योंकि वो इंटेंट ही वैसा है। ओवर समाप्त हुआ एक और चौके के साथ। इस बार भी इस बार सामने खेलने का प्रयास था, किनारा लगा, फील्डर वहां कोई नहीं, और चौका। डिसअपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलती हुई। गेंदबाजी में बदलाव, पेसर्स को थोड़ा अब रेस्ट दिया गया है ऐसा लग रहा है। स्पिनर को अटैक में लाया जा रहा है क्योंकि वो विकेट चाहिए। कैप्टन जानते हैं, करण मेथा लेग स्पिन गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। विकेट चाहिए, 3 ओवर 36, 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से जा रहे हैं। और स्पेशली जिस इंटेंट से अब्दुल्ला और सईद बल्लेबाजी कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं अपना विकेट खोने से। वो कॉन्फिडेंस है अपनी बल्लेबाजी में और वो बैकिंग मिल रही है कैप्टन से भी शायद। फिलहाल यहाँ बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, अच्छी गेंद थी, स्लो थी हवा में, जिसके चलते वो शॉट जल्दी आया अब्दुल्ला के बल्ले से और मिस करते हुए। ये अच्छी गेंद, लेकिन ये कमाल का शॉट, मिड ऑफ फील्डर ऊपर था। बाहर भी होता तो शायद कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम किया था और बहुत अच्छी प्लेसमेंट थी, बिल्कुल सीधा। वो जहां गैप होता है वो साइड स्क्रीन और लॉन्ग ऑफ के फील्डर का, वहां गया ये चौका। और इस ओवर का भी पहला आ चुका है। और कितनी बाउंड्रीज आ रही हैं इस ओवर से, ये बड़ा ओवर बना सकते हैं अब्दुल्ला, क्योंकि प्रेशर महसूस करेंगे उस बाउंड्री के बाद। अब करन फिर से पिच्ड अप एंड स्लॉग स्वीप एंड अ ह्यूज सिक्स। भाई गेंदबाज कह रहे थे कमाल है, लेकिन बल्लेबाज भी तो देखिए, वो भी तो लाजवाब है। कमाल की बैटिंग करते हुए स्लॉग स्वीप आया, वो फ्लाइट और वो खूबसूरत टाइमिंग, वो खूबसूरत पोज हमारे कैमरा के लिए वहां दिया। 10 रन आ गए हैं पिछली 2 गेंदों में, चौका और उसके बाद मैक्सिमम। अगली गेंद इस बार बहुत ऊपर थी, वो उतना रूम नहीं मिला बड़े शॉट का, अदरवाइज शफल तो इस गेंद पर भी हुए थे अब्दुल्ला। फिलहाल डॉट गेंद आती हुई। फिर से बड़ा शॉट और खूबसूरत शॉट, एक बार फिर से चौके का इशारा अंपायर की तरफ से आया है। क्या कमाल की पावर हिटिंग देखने को मिल रही है। इस बार थोड़ा तेज करने का प्रयास था, वो गेंद छोटी रह गई, लेकिन बाउंड्री वो लिखी हुई थी उस गेंद पे। जैसे ही वो गेंद बल्ले से निकली अब्दुल्ला के, 50 रन भी पूरे हुए उस चौके के साथ सीसीए के। आखिरी गेंद अभी भी बाकी इस ओवर की। बहुत खूबसूरत शॉट इस बार, बिल्कुल हमारी ब्रॉडकास्टिंग वैन के सामने, 6 रन।
ये रिमांड पे लिया अच्छा खासा करन मेहता को वहां, और अब्दुल्ला ने अपनी क्लास दिखाई, 42 पे पहुंच चुके हैं। ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो इनिंग शुरू हुई थी और ये बल्लेबाज 42 पे पहुंच भी गए हैं। कुछ यही क्लास है, कुछ यही दमखम है इनकी बल्लेबाजी में, वो स्किल है जो इस चेज को अब धीरे धीरे CCA 1 के खेमे में लेकर जा रहा है। 56 4 ओवर के बाद बिना किसी विकेट के। अटैक में तो लाए थे विकेट निकालने के लिए, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दबाव में चले गए हैं। अब शायद जो उन्होंने 4 ओवर का कोटा कंप्लीट भी करना था, वो भी अब शायद कैप्टन 4 बार सोचेंगे कि उनको दोबारा गेंदबाजी में लाएंगे ना, क्योंकि उस प्रकार से अटैक हुआ है। 20 रन आए उस ओवर से, 2 चौके और 2 बड़े मैक्सिमम्स। ओम प्रकाश पवेलियन एंड से इस बार बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था वहां सईद का, बिल्कुल खेला मिड ऑन के हाथ में। या सईद स्ट्राइक दे सकते हैं अब्दुल्ला को, क्योंकि आज उनके बल्ले पे गेंद अच्छी आ रही है, और जिस प्रकार से बल्ले पे आ रही है वो बहुत जल्दी ये मैच को खत्म भी कर सकते हैं CCA के लिए। इस बार फिर से मिड ऑन की दिशा में, फिर बैक टू बैक डॉट बॉल्स आती हुई। हवा में गेंद, और टाइमिंग कितनी है उस पे, फील्डर पीछे भागे लेकिन दूर रह गए उस गेंद से। सिंगल ही मिलेगा सिर्फ, टाइमिंग उतनी खास नहीं थी। अच्छी चेज वहां फील्डर के द्वारा, प्रयास बहुत बढ़िया था, कैच तो कहीं से भी नहीं था वो, और सिर्फ एक ही रन मिला वो। अब्दुल्ला स्ट्राइक पे अब। इस बार हवा में है, कोई टाइमिंग नहीं है, ओम प्रकाश नीचे भाग रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं। एक बार फिर से सिर्फ सिंगल ही आएगा उस गेंद पे। सईद मोहम्मद स्ट्राइक पे। अच्छा ओवर आया अभी तक ओम प्रकाश का, 4 गेंदों में मात्र 2 रन आए हैं। स्लोअर वन थी इस बार, अच्छी गेंद उसके हल्के हाथ से खेला।
किनारा लगा इस बार, लेकिन शॉट थर्ड के फील्डर के बिल्कुल हाथ में वहां। सिर्फ सिंगल के साथ ये ओवर समाप्त होगा, 60 बिना किसी नुकसान 5 ओवर के बाद। नए गेंदबाज अटैक में, आखिरी ओवर पावर प्ले का, लेकिन 60 रन बन चुके हैं। They just need 99 from here. निशांत शर्मा गेंदबाजी के लिए आए हैं, सईद मोहम्मद स्ट्राइक पे होंगे। डॉट बॉल से शुरुआत हुई है निशांत शर्मा के इस स्पेल की। मिड विकेट है और बढ़िया शॉट, ये टाइमिंग पूरी जबरदस्त। फाइनली एक बाउंड्री बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच से आती हुई सईद के लिए। इससे पहले 2 बाउंड्रीज आ चुकी हैं, लेकिन ये बाउंड्री का कॉन्फिडेंस देखिए, बिल्कुल वो शफल हुए, थोड़ा सा रूम बनाया। गेंद तो हाफ वॉली थी, लेकिन उसका इस्तेमाल भी करना था, जो कि पूरे तरीके से यहाँ किया। यहाँ एक बार फिर से बड़ा शॉट आया है स्क्वायर लेग की दिशा में, इस बार जाती हुई फील्डर, वहां भी कोई नहीं। बैक टू बैक बाउंड्रीज सईद मोहम्मद के लिए। टाइमिंग इस पे भी उतनी खास नहीं थी, लेकिन वो पावर प्ले उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए। एक और चौका आता हुआ। सिक्सटी 67 पे पहुंच गया है टोटल। फिर से बड़ा शॉट, इस बार शायद मैक्सिमम भी हो सकता है। सिर्फ 2 कदम पहले गिरी वो बाउंड्री रोप की गेंद। तीसरा चौका, 3 लगातार चौके। ये मुकाबला नहीं है, मजाक कर रहे हैं इससे शायद सेंट जोन्स के साथ।
उनकी क्लास बहुत ज़्यादा उभर के सामने आ रही है सीसीए 1 के बल्लेबाजों की सेंट जोन्स के खिलाफ। दिखा रहे हैं क्यों वो टेबल टॉपर्स हैं, या वो टॉप 2 में है, और दिखा रहे हैं सेंट जोन्स इस बार क्यों बॉटम 2 में है। क्योंकि द ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो ये दोनों टीम्स खेल रही हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस। वो इंटेंट देखिए आप, 3 चौके आ चुके हैं। अब ये नहीं है कि रुकेंगे यहाँ से, चौथे चौके के लिए भी जाएंगे। यही T20 की बेस्ट बात है। फिर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास यहाँ भी था, लेकिन थोड़ा सा वो लेंथ चेंज किया, गेंद की लाइन में नहीं आए अच्छे से सईद मोहम्मद, वहाँ शॉट मिस हुआ। लेकिन काबिलियत वो पूरी है हर गेंद पे बड़ा शॉट लगाने की। हल्के हाथ से खेला इस बार, लॉन्ग ऑफ की दिशा में सिंगल मिलेगा इस गेंद पे। 14 रन आए हैं इस ओवर से। ओम प्रकाश एक बार फिर से अटैक में वापस आए हैं। पावर प्ले समाप्त हुआ है और ये कमाल का पावर प्ले रहा है। लगभग आधे रन बना लिए हैं जितने चाहिए चेज करने के लिए इस पावर प्ले में। 73 हो गया है टोटल। अब्दुल्ला स्ट्राइक पे होंगे। बहुत शानदार बैटिंग की अब्दुल्ला ने पावर प्ले में। कमाल का डिफेंस वहाँ, अच्छी पेस थी। बढ़िया गेंद, ये पढ़ के थोड़ी सी अंदर आई यहाँ। ड्राइव करने का प्रयास था वहां, चूके ओम प्रकाश अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं। 16 रन दिए हैं अभी तक। पहला ओवर महंगा था थोड़ा, 11 रन आए थे। अगले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। उसके बाद इस ओवर में भी अभी तक 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन आया। अच्छी वापसी की है पवेलियन एंड से। यहाँ फुल टॉस थी जिसको सिंगल के लिए खेला अब्दुल्ला ने। 4 गेंदों में 2 रन आए हैं अभी तक।
रिक्वायर्ड रन रेट है जो कि लगभग 8 रन प्रति ओवर का था इस चेज की शुरुआत में। वो इस कमाल की पावर प्ले की अटैकिंग बैटिंग से 6.38 पे आ गया है। बहुत खराब गेंद थी ये भी। स्लोअर वन शायद करने का प्रयास था वो, बैक ऑफ द हैंड, और बहुत ज़्यादा डाउन द लेग। अच्छी बात यह है कि विकेट कीपर की रीच में थी वो गेंद। इससे पहले हमने देखा था कि वाइड एंड बायस के 4 आए थे, ये नज़र डालिए, शायद वही लेग कटर या बैक ऑफ द हैंड करने का प्रयास था, बहुत दूर बल्लेबाज से वाइड गेंद। इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी मिड ऑफ के फील्डर के पास में, डॉट बॉल। 5 गेंदों में 3 रन आए। अच्छा मिश्रण गेंदबाजी में दिखाया ओम प्रकाश ने। वो इजी बाउंड्री डिलीवरीज नहीं दे रहे हैं गेंदबाज को, बल्लेबाजों को। इस बार किनारा था बल्ले का, टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं, लेकिन ये कैच चिटक गया हाथ से, या कहीं थोड़ा सा शॉट गिरा फील्डर के। सिर्फ सिंगल मिलेगा इस गेंद पे। सिंगल के साथ ओवर समाप्त। 76 रन एट द एंड ऑफ 7 ओवर्स। गेंदबाजी में बदलाव, हर्षित पाटिल नए गेंदबाज आए हैं सईद मोहम्मद के सामने। चैलेंज रहेगा क्योंकि राइट फ्रॉम बॉल वन अटैक करने का प्रयास करते हैं ये दोनों ही बैट्समैन। इंटरेस्टिंग रहेगा किस प्रकार से हर्षित पाटिल टैकल करेंगे इन दोनों को, स्पेशली जब दोनों सेट हैं। रन रेट 11 रन प्रति ओवर के आसपास चल रहा है। विकेट चाहिए इस चीज, या कहीं इस डिफेंड में थोड़ा सा मज़ा डालने के लिए, या बड़ा शॉट, और कमाल का बड़ा शॉट, बहुत दूर गिरा ये जाके मैदान के। ज्यादा दूर नहीं था, स्पेशली जब ऑफ स्पिनर सामने हो तो सईद मोहम्मद के बड़े शॉट वैसे तो हर गेंदबाज के सामने आते हैं, लेकिन ऑफ स्पिनर के सामने वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लालच आ जाता है। ये देखिए फ्लाइट थी बिल्कुल स्लॉट में, बल्ले के बीचों बीच, और वो पार्किंग लॉट के बीचों बीच। उसके बाद फील्डर सिर्फ दर्शक थे वहां, गेंद की तरफ देखा भी नहीं फील्डर ने, और चुपके से बाउंड्री के पार आए और गेंद को अंदर थ्रो किया। एक मैक्सिमम आ चुका है अब 3 गेंदों में। क्या एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए जाएंगे? थोड़ा शफल हुए थे, रुके वहां हर्षित।
फिर शफल हुए, इस बार तेज की गेंद, कैच का हल्का सा मौका जरूर बना था वहां, और सिंगल कंप्लीट करेंगे और दूसरे के लिए भी वापस आ जाएंगे। ओवर थ्रोज के चलते तीसरा भी जाते हैं अब्दुल्ला तो, और तीसरा भी शायद पूरा कर लेंगे। सईद मोहम्मद अपनी 100% फिटनेस पे तो नहीं है आज शायद, इसीलिए गेंदबाजी भी नहीं की। वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन 3 रन पूरे करेंगे। तो 4 गेंदों में 9 रन इस ओवर में भी आ चुके हैं। अब अब्दुल्ला स्ट्राइक पे हैं, तो एक और बड़े शॉट की उम्मीद लगाई जा सकती है। फ्लाइटेड डिलीवरी, इस बार डॉट। आखिरी गेंद बाकी बची है। 9 रन आए हैं अभी तक इस ओवर में, एक मैक्सिमम, और 3 रन आए थे उससे पिछली गेंद पे। लॉन्ग ऑफ की दिशा में सर्व सिंगल मिलेगा। 10 रन आए इस ओवर से, 86 8 के बाद। गेंदबाजी में एक बार फिर से बदलाव। 86 हो चुका है टोटल 8 ओवर के बाद। सिर्फ 73 रन चाहिए इस चेज में। राइट आर्म मीडियम पेस कमला शंकर अटैक में आए हैं। और सिंगल से शुरुआत हुई है। सईद मोहम्मद स्ट्राइक पे होंगे। पिछले ओवर में
एक बहुत खूबसूरत शॉट लगाया था हर्षित के खिलाफ, जो कि 6 रन के लिए गया था। काफ़ी अच्छी टाइमिंग थी उस पे। तो 36 पे आ चुके हैं। ये पार्टनरशिप पर 87 रनों की बड़ा शॉट ये भी है, और फील्डर से थोड़ा दूर रह गई वहां। 6 रन मिल जाएंगे। प्रयास किया था फील्डर ने वहां पूरा कि उस गेंद को बाउंड्री के अंदर धकेल सके, लेकिन वो प्रयास कुछ ज्यादा काम आया नहीं। 6 रन मिलेंगे एक और। 93 पे पहुंच गया है टोटल। शफल किया इस बार, लेंथ को खींचा कमला शंकर ने। अच्छी माइंड गेम यहाँ। गेंदबाजी में आप सिर्फ वो बने हुए प्लान्स पे आके स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं कर सकते हैं कि जो एक बार सोच लिया गेंद से पहले वही। कई बार आपको लास्ट मोमेंट डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, जो कि यहाँ लिया कमला शंकर ने। यहाँ उसी बीच एक और बड़ा शॉट, और शायद ये भी मैक्सिमम 4 होगा। इनफैक्ट अंपायर का इशारा है, लेकिन फिलहाल दबाव तो हर एक शॉट से पड़ता जा रहा है सेंट जोन्स 1 पे। टाइमिंग इस बार उतनी बढ़िया नहीं, लेकिन यहाँ दूर से ऐसा लगा कि शायद बाउंड्री रोप क्लियर कर गई, लेकिन अंपायर ने चौके का इशारा किया। यहाँ कमाल का अंत उस ओवर का भी हुआ। सईद मोहम्मद ने चौके के साथ उस ओवर की समाप्ति की। इट्स 97 फॉर नन एट द एंड ऑफ 9 ओवर्स। फिर से अटैक में आए हैं। थोड़ी बहुत बातचीत कैप्टन के साथ, शायद वो फील्ड प्लेसमेंट्स को लेके, क्योंकि अब्दुल्ला स्ट्राइक पे हैं और अब्दुल्ला इस समय 45 रन पे खेल रहे हैं 28 गेंदों में। सईद मोहम्मद, जिन्होंने थोड़ी स्लो शुरुआत की थी, वो अब्दुल्ला से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं अब, ऐसा लग रहा है। ही इज़ ऑन 46 ऑफ 26, 6 चौके 2 बड़े मैक्सिमम्स, और 177 का स्ट्राइक रेट है। हर्षित पाटिल, ये बहुत बड़ा ओवर हो सकता है दोनों टीम्स के नज़रिए से, क्योंकि अगर विकेट आती है तो ये पार्टनरशिप टूट सकती है, नहीं तो ये बहुत बड़ा ओवर रनों के लिहाज से भी हो सकता है। सिंगल से शुरुआत हुई है खैर इस ओवर की। अब्दुल्ला थोड़े से गेयर्स चेंज किए हैं। पावर प्ले में बहुत ज़्यादा अटैकिंग थे, लेकिन यहाँ स्ट्रैटेजी को शायद थोड़ा बदला है। शायद आखिरी रन तक वो चेज के खेलना चाहते हैं इस मुकाबले को, लेकिन फिलहाल सईद मोहम्मद, ये जब स्ट्राइक पे होते हैं तो इरादे शॉट की तरह बिल्कुल साफ होते हैं। इस कमाल के मैक्सिमम के साथ 50 पूरे किए। एक वो आदत सी हो गई है अब तो, बल्ला उठाना भी बंद कर दिया इन्होंने 50 पे या किसी बड़े माइलस्टोन पे। ना केवल 50 पूरी हुई शॉट से, 100 रन भी पूरे हुए हैं टीम के। 104 पे टोटल पहुंच गया है। यहां से 55 रन चाहिए। हर्षित पाटिल को गेंदबाजी की लेंथ चेंज करनी होगी, पेस चेंज करनी होगी, अदरवाइज बड़े शॉट्स आते रहेंगे और ये मुकाबला डेड रबर बनता चला जाएगा सेंट जोन्स के लिए। फिलहाल अब अब्दुल्ला स्ट्राइक पे हैं, क्या ये भी बड़े शॉट का प्रयास करेंगे?
क्या ये भी चौके या मैक्सिमम से 50 करेंगे? जी नहीं, थोड़ी सोच अलग है यहाँ। अब शायद पावर प्ले के बाद वो बातचीत की कि अब रोल्स में थोड़ा सा बदलाव है, सईद मोहम्मद अटैक करेंगे और अब्दुल्ला थोड़ा सा टाइम लेंगे, वहाँ अंत तक खेलने का प्रयास करेंगे, कुछ वैसी बातचीत लग रही है। लेकिन शफल किया था, यहाँ बड़े शॉट का प्रयास था, कीपर ने मिस किया। विल हैव टू सी। जी हाँ, 22 का इशारा, बाई का एक रन आता हुआ उस गेंद पे वहाँ। आखिरी गेंद है, सईद एक बार फिर से स्ट्राइक पे होंगे। फिर से बड़ा शॉट, जब जब स्ट्राइक पे आते हैं तो बड़े शॉट्स आते हैं, और जब बड़े शॉट्स इनके बल्ले से आते हैं तो या तो वो चौका निकलता है या वो मैक्सिमम होता है। अंपायर के कंफर्मेशन, फील्डर के कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे, और चौके का इशारा शायद। जी हाँ, उस ओवर में मैक्सिमम भी आया और अब ये चौका। इस बार टाइमिंग थोड़ी सी चूके थे, फील्डर वहां थे निशांत के रूप में, थोड़ी सी मिस जजमेंट। जी हाँ, बाउंड्री रोप के अंदर गिरी, वो बाउंड्री मार्किंग के अंदर गिरी गेंद। चौके के साथ ओवर समाप्त हुआ 110, 10 ओवर के बाद बिना किसी विकेट के। कमला शंकर अटैक में वापस आते हुए, पिछले ओवर में 11 रन आए थे इनके। फिलहाल ये चेज, शायद ऐसा लग रहा है औपचारिकताएं बची हैं, क्योंकि मात्र 50 रन रह गए हैं यहाँ से और 10 विकेट हाथ में है। इनफैक्ट 49 चाहिए, 10 विकेट हाथ में है। और CCA 1 जैसी बड़ी टीम जो कि बहुत डीप बैटिंग करते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किलें शायद होने नहीं वाली है, अनटिल और अनलेस बहुत बड़ा कोलैप्स हो जाए। फिर से बड़ा शॉट लगाने का प्रयास है यहाँ, सईद मोहम्मद लगातार सिंगल डबल्स तो भागने में इंटरेस्टेड ही नहीं रहते हैं, और आज जो 100% फिट भी नहीं है, तो कुछ इसीलिए भी हमें बड़े शॉट ज़्यादा दिख रहे हैं। ये देखिए, उसमें एक और ऐड कर दीजिए आप, फील्डर थे इसीलिए वो चौका बच गया, लेकिन वो इंटेंट, लगातार उस इंटेंट की बात होती है, किस प्रकार से आप गेंदबाज पे हावी होना चाहते हैं, वो ज़रूरी। अगर ये चौका नहीं भी आया तो कोई इशू नहीं है यहाँ CCA 1 के लिए, लेकिन अब गेंदबाज डिफेंसिव सोचेगा, वो बच के निकलने की सोचेगा, और यहाँ बच के निकलने के चक्कर में शायद ज़्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे। चौका मिल जाएगा, खराब गेंद यहाँ डाउन द लेग, और अच्छी खासी गेंदों को बाउंड्रीज तक पहुंचाया। ये तो बहुत आसान गेंद थी अब्दुल्ला के लिए। इस चौके के साथ 50 पूरे करेंगे अब्दुल्ला अपने। पावर प्ले में ही 42 रन पे आ गए थे, उसके बाद से
काफी शांत हुए अपनी बल्लेबाजी में, लेकिन अब ये 50 पूरा किया। 34 गेंदों में 4 चौके और 4 बड़े मैक्सिमम्स। 150 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की अपील की जा रही है। बल्ले का इशारा अंपायर की तरफ से कि बैट लगा है उस गेंद पे। तो 6 रन आए उस ओवर से कमला शंकर के 116 बिना किसी विकेट के 11 के बाद। स्ट्रीम को लाइक कर रहे हैं तो वो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब भी कर दें अगर अभी तक आपने किया नहीं है, क्योंकि क्रिकेटिंग एक्शन लगातार आता रहेगा आपके सामने। और उसी बीच हमारे स्पॉन्सर्स का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स जायका, बट कढ़ाई, काइनेटिक स्पोर्ट्स, सोर स्पोर्ट्स, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर्स का। और आप भी इसी तरह अपने बिजनेस की एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो हमें रीच आउट कर सकते हैं calgarycricketTV@gmail.com पे। हर्षित पाटिल एक बार फिर से अटैक में वापस। हर्षित पाटिल अटैक में आए हैं, गैप में ये गेंद गई है और सिर्फ सिंगल मिलेगा, क्योंकि टाइमिंग उस पर इतनी खास नहीं थी। तीसरा ओवर कर रहे हैं हर्षित। अभी तक 22 रन दिए थे पिछले गेंद तक इन्होंने। फिलहाल अब्दुल्ला स्ट्राइक पे। 50 हो चुके हैं, क्या अब थोड़े बड़े शॉट आएंगे? ये आया बड़ा शॉट, कैप नहीं मिला उस बार। शफल किया और इनफील्ड के ऊपर से फाइन लेग वहां था नहीं, स्क्वायर लेग और फाइन लेग की दिशा में कमाल का शॉट देखने को मिला सईद की तरफ से। ना केवल गेंदबाजों की फीलिंग के साथ खिलवाड़, ये फील्डिंग के साथ भी खिलवाड़ करते हुए, कैप्टन की रणनीतियों के साथ मजाक करते हुए सईद मोहम्मद अपने हिसाब से गेम को कंट्रोल करते हुए। एक बार फिर से खेला गया उस शॉट को कवर्स की दिशा में सिंगल के लिए। 7 रन आ चुके हैं अभी तक इस ओवर से। और अब अब्दुल्ला स्ट्राइक पे होंगे। 123 बन गए हैं। फिर से बड़ा शॉट आया, गैप भी नहीं मिला, एलिवेशन भी नहीं मिला, तो फील्डर थे वहां, सिर्फ सिंगल मिलेगा। फिलहाल आखिरी गेंद है इस ओवर की। 8 रन आ चुके हैं इस ओवर से। फिर से बड़ा शॉट और इस बार भी चौका मिलेगा इस ओवर के समाप्त करने के लिए। तो 128 होंगे इस ओवर की समाप्ति में बिना किसी विकेट के।
और अब यहाँ से सिर्फ 31 रन चाहिए जीत के लिए सीसीए वन को। नजर डालिए शॉट पे, फिर से वही फ्लाइटेड गेंद और वो स्लॉट में, और एक बार फिर आया बड़ा शॉट। आज कहानी कुछ बदली नहीं है ज़्यादा। तो 8 ओवर में 31, यानी कि गेंदों की अब तो बात है ही नहीं। अब बात ये है कि कितने ओवर पहले ये मैच खत्म होगा। 12 ओवर 128 बिना किसी विकेट के। सईद मोहम्मद ऑन 68 ऑफ 35, प्लेइंग विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 195 ऑलमोस्ट। और अब्दुल्ला 37 गेंद में 53 रन, 4 चौके 4 बड़े छक्के। He's playing with the strike rate of 143. नई गेंदबाज अटैक में, वाइड गेंद से शुरुआत होगी इस गेंदबाजी की। नए गेंदबाज के लिए हुसैन रजा अटैक में आए हैं। यूजुअली अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज गेंदबाजी के हाल ही कुछ ऐसे रहे हैं कि आज आना पड़ा है गेंदबाजी के लिए भी। बारह ओवर 130, 12.1 इनफैक्ट 130 रन पे टोटल पहुंचा है। They just need 29 from here. सिंगल मिलेगा इस गेंद पे। थोड़ी सी स्लोअर वन की थी वो, डॉट बॉल होगी। अब्दुल्ला इंटरेस्टिंग है कि बिल्कुल भी चांसेस नहीं लिए हैं जब से पावर प्ले समाप्त हुआ है। बहुत अटैकिंग थे, शायद 16-17 गेंदों में ही 42 रन पे पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद एकदम से रन गति पे बहुत ज़्यादा लगाम लगा है, और इस बार भी सिर्फ सिंगल मिलेगा उस शॉट के चलते। ये ओवर समाप्त हुआ उस सिंगल के साथ, 132 बिना किसी विकेट के 13 ओवर के बाद।
बैटिंग पे नज़र डालें तो आज इन दोनों ने ही कमान संभाली है बल्लेबाजी की। अब्दुल्ला खेल रहे हैं 54 नॉट आउट और 69 नॉट आउट। सईद मोहम्मद, बल्लेबाजी बहुत है लेकिन आज ज़रूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि ओपनर्स जब आपके इतने घातक हों तो वो अगले बल्लेबाजों को इतनी चिंता करने की ज़रूरत होती नहीं है, चाहे टोटल कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और वहीं गेंदबाजी में अगर नज़र डालें तो यहाँ हाल कुछ ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। आर्यन शर्मा 2 ओवर 24। ओम प्रकाश ने अच्छी गेंदबाजी की, 3 ओवर 19, लेकिन उसके अलावा करण मेथा 1 ओवर 20 महंगे। निशांत शर्मा 1 ओवर 13 बहुत महंगे। हर्षद पटेल 3 ओवर 34। कमला शंकर 2 ओवर 17 और पिछला ओवर हुसैन रजा ने अच्छा किया, सिर्फ 3 आए उससे। तो विकेट का खाता बिल्कुल खाली है, जो कि गेंदबाजी टीम को चाहिए होता है डिफेंड करते हुए। वैसा कुछ हुआ नहीं है आज के मुकाबले में। एक और नए गेंदबाज का आगमन, छोटी गेंद से शुरुआत हुई है और गैप में खेला है उस गेंद को, क्या चौके तक पहुंचेगी ये देखना होगा। दूसरे के लिए वापस आ गए हैं। ओम प्रकाश थे वहां फील्डर। श्रीवत्स विजयन, एक बार फिर से छोटी गेंद, लगातार बैक टू बैक छोटी गेंदें आती हुई, और इस छोटी गेंद पे शायद पूरी तरह से इस्तेमाल किया और चौका मिल जाएगा। 21 रन चाहिए अब यहाँ से। अब्दुल्ला पहुंचे 60 पर 136 के स्ट्राइक रेट से। फिर से छोटी गेंद और इस बार बड़ा शॉट उस छोटी गेंद पे, 6 मिल जाएंगे। तीसरी गेंद है इस ओवर की और तीनों गेंदें शॉर्ट पिच। ऐसा लग रहा है कि वो अभी हाथ खुले ही नहीं है, वार्म अप हुआ नहीं है, और 3 गेंदें यहाँ देखने को मिल गई हैं गेंदबाज से। श्रीवत्स बिल्कुल अपने ही पैरों में गेंद फेंक ली और वो बहुत खूबसूरत शॉट एक बार फिर से। इजी पिकिंग्स फॉर अब्दुल्ला। 5वां मैक्सिमम आज का उनका। 15 रन चाहिए अब यहाँ से मात्र। 13.3 ओवर्स में स्कोर देखिए, 144 विदाउट अ लॉस। ये मुकाबला अपनी मुट्ठी में कर लिया, बिल्कुल गेम से बाहर कर दिया। राइट फ्रॉम बॉल 1 जब से चेस करने आए हैं। इस बार भी दमदार शॉट, लेकिन सामने फील्डर की तरफ, सिर्फ सिंगल मिलेगा। डॉट बॉल के साथ इस ओवर की समाप्ति होगी। 145 रन एट द एंड ऑफ 14 ओवर्स। यहाँ से चाहिए सिर्फ 14 रन। देखना यह है कि क्या इस ओवर में मुकाबला खत्म होगा या फिर उससे अगले ओवर में, अब मात्र औपचारिकता बची है जो कि पूरी करेंगे अब्दुल्ला और सईद मोहम्मद। यहाँ अनबीटन पार्टनरशिप अभी तक रही है 145 रन की। 159 आप चेस कर रहे हैं, उसमें से 145 ओपनर्स ने कर लिए।
डोमिनेशन का लेवल देखिए, क्यों टॉप 2 में है पॉइंट्स टेबल के, वो दिखा रहे हैं इस गेम में। खैर हर गेम में देखने को मिलता है जिस प्रकार से बैटिंग करती है ये टीम। चेज करना इसीलिए पसंद है क्योंकि अपनी बल्लेबाजी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, हालांकि गेंदबाजी भी बहुत उच्च स्तरीय है, लेकिन बल्लेबाजी देखिए आप, 145 बिना किसी विकेट के। हुसैन रजा एक बार फिर से अटैक में आए हैं, डाउन द लेग सिंगल ही लेंगे शायद, ऐसा लग रहा है। दूसरे के लिए अब्दुल्ला वापस आना चाहते हैं लेकिन किसी भी मूड में नहीं है सईद। 13 रन चाहिए। बड़ा शॉट, कितनी टाइमिंग है उस पे, फील्डर बिल्कुल भी जज नहीं कर पाए उसे। 6 रन, 7 रन चाहिए अब यहां से सिर्फ। डेढ़ सौ के पार पहुंचे इस मैक्सिमम के साथ, और अब सिर्फ और सिर्फ 7 रन चाहिए इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। सिंगल मिलेगा इस बार इस गेंद पे, तो 6 रन चाहिए अब। इस ओवर में अभी 3 गेंदें बाकी हैं। क्या बड़े शॉट से समाप्ति कर सकते हैं इस मैच की? क्या वो जो स्वैग से स्वागत हुआ था, क्या वो शान से समाप्ति भी हो सकती है इस मैच की? फिलहाल अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अब्दुल्ला 5 चौके 5 मैक्सिमम, सईद मोहम्मद 9 चौके 4 मैक्सिमम। 76 रन पे बैटिंग कर रहे हैं मात्र 40 गेंदों में 190 की स्ट्राइक रेट से। इस बार आया बड़ा शॉट, टाइमिंग उतनी खास नहीं, फील्डर है वहां, सिर्फ सिंगल ही मिलेगा उस गेंद पे। तो 5 रन चाहिए, आखिरी गेंद है। सईद से पूरी उम्मीद है टीम को कि ये बड़ा मैक्सिमम लगा सकते हैं इस गेंद पे। बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर है वहां, सिर्फ सिंगल मिलेगा। ओवर की समाप्ति होगी, 155 फॉर नो लॉस, 4 रन चाहिए जीत के लिए। आखिरी 4 रन इस मुकाबले को जीत के लिए चाहिए। स्ट्राइक पे आए इस समय सईद मोहम्मद, नो बॉल होगी ये तो कंगाली में आटा गीला वाला हिसाब हो गया है कि पहले ही मुकाबले में कुछ बचा नहीं है और नो बॉल आ गई, और उस नो बॉल की फ्री हिट पे वाइड ऐड कर दीजिए। तो शायद अब वो बल्ले से रन खा के थक चुके हैं गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज
तो अब शायद वो सोच रहे हैं जो बचे 4 रन थे अब उसमें से 2 ही बचे हैं, वो भी एक्स्ट्राज के चलते। ये फ्री हिट है, ये लीजिए एक और वाइड। तो अब 1 रन बचा है। वो जो बड़ा शॉट लगा के मैच खत्म करने का प्रयास था, वो सईद भी कह रहे हैं मैं वहां आके खड़ा हो जाऊंगा, और वो उससे भी बाहर करने का प्रयास था, लेकिन 6 रन के साथ स्वैग से जो स्वागत हुआ था उसकी शान से समाप्ति इस मुकाबले की। 6 रन के साथ ये मुकाबला अपने नाम किया CCA 1 ने 10 विकेट से, और 28 गेंदे रहते ये मैच जीता। खैर ये भी नो बॉल ही थी, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है। आज सारी गेंदों को ही फ्री हिट्स की तरह खेला है सईद मोहम्मद और अब्दुल्ला ने। बहुत शानदार बल्लेबाजी। एक बड़ी टीम से आप कुछ इसी प्रकार का प्रदर्शन एक्सपेक्ट करते हैं, और एक बार फिर से डिलीवर किया, निराश नहीं किया अपनी टीम के चाहने वालों को यहां CCA ने। सईद मोहम्मद, ये वो हीरो है जो अपना रोल अदा करके चुपचाप से पवेलियन लौट गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार की इन्होंने आज बैटिंग की है कोई जवाब नहीं था गेंदबाजों के पास। मैन ऑफ द मैच रहेंगे विदाउट अ डाउट। 83 रन किए, 9 चौके, 5 छक्कों की मदद से, 44 गेंदें ली मात्र, 190 का स्ट्राइक रेट, और वो खुशियां सिर्फ CCA की खेमे में। यहाँ एक या दो ही खिलाड़ी नाखुश होंगे, वो होंगे जो बल्लेबाज अगली बल्लेबाजी करने आने वाले थे, क्योंकि उन्होंने पैड किए होंगे, तैयार हुए होंगे, लेकिन आज उनके सपनों पे भी पानी फिरा। आज तो बल्लेबाजी नहीं आएगी, क्योंकि ये मुकाबला अपने नाम किया 10 विकेट से। आपने इस स्ट्रीम को एंजॉय किया, इस मुकाबले को एंजॉय किया, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल अगर अभी तक किया नहीं है, और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। नोटिफिकेशन की घंटी भी है वहाँ, जो कि आप बजा सकते हैं अगर लगातार नोटिफिकेशंस चाहिए हमारी कवरेज के। लेकिन फिलहाल CCA 1 10 विकेट से मुकाबला आपने नाम किया। मुकाबले के स्कोर कार्ड्स पे नज़र डालते हैं, किस प्रकार से ये बैटिंग रही, किस प्रकार से ये गेंदबाजी रही इस मुकाबले में। CCA 1 ज़्यादा बल्लेबाजों को मौका दिया ही नहीं, पहले 2 बल्लेबाजों ने ही सारा काम किया इस चीज़ का। 13 एक्स्ट्रा ज़रूर आए, लेकिन अगर ना भी आए होते तो शायद 2 गेंदें और लगती और ये मुकाबला ख़त्म हो जाता। 69 किए अब्दुल्ला ने और सईद मोहम्मद, 83 ऑफ जस्ट 44। बॉलिंग धजियां उड़ गई यहाँ। गौतम रमन ने देखिए एक गेंद में ही 10 दे दिए उन्होंने। 60 की इकोनॉमी, पूरा ओवर करते तो शायद 60 या 70 रन दे देते। श्रीवत्स विजयन 1 ओवर 13, 2 ओवर 13 हुसैन रजा, कमला शंकर 2 ओवर 17, हर्षित पटेल 3 ओवर 34, निशांत शर्मा 1 ओवर 13, करण मेथा 1 ओवर 20। बहुत महंगे, आज किसी का भी दिन नहीं था गेंदबाजी में। फॉल ऑफ विकेट्स देखिए, कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ये स्कोरिंग का एरर नहीं है, ये विकेट्स ही नहीं कोई खोई हैं आज CCA ने। मैच की समरी पे नज़र डालते हैं। सेंट जोन्स 1 पहले बल्लेबाजी करने उतरे थे, क्योंकि टॉस जीता था CCA ने। गेंदबाजी का फैसला किया था, बोर्ड पे लगाए 159 सेंट जोन्स ने, और जवाब में 15.1 ओवर में 29 गेंदे रहते 10 विकेट हाथ में ये मुकाबला अपने नाम किया। पॉइंट्स टेबल पे नजर डालें, किस प्रकार से इस मैच का इफेक्ट आया पॉइंट्स टेबल पे। तो CCA 1 पहुंच जाएंगे 20 पॉइंट्स पे, और नेट रन रेट पे नजर डालिए 1.5 पॉजिटिव। प्लेऑफ्स में जाते जाते बहुत काम आने वाली है ये रन रेट, जिसका आज
पूरी तरह से इस्तेमाल किया। सेंट जॉन्स जो कि बॉटम 2 में थे, वो अब चले गए हैं आखिरी पायदान पे। सिर्फ 8 पॉइंट्स बना पाए वो इस पूरी लीग में अभी तक 9 मैचेस में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर्स का भी, वी आर प्राउड टू हैव देम। आप भी अगर इसी तरह अपने बिजनेसेस को एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए ईमेल आईडी calgarycricketTV@gmail.com पे। बहुत बहुत शुक्रिया आज की स्ट्रीम में जुड़ने के लिए। दिस इज विभू बजाज साइनिंग ऑफ लाइव।